Hi, guys. Welcome to another episode of our podcast, Talent First. Today, we have with us someone that anyone who has anything to do with analytics in India should know about. Someone who has lived a full life in the analytics industry. Someone who I deeply respect, take a lot of advice from. Hi, Sameer. Hi, how are you? Hi, Raghav. Pleasure meeting you. Same here. So, Sameer, you, as you know, right? Like, I think you have also seen a couple of our podcasts. Our format is, in the beginning, हमें एक elevator pitch चाहिए. और आप दिल्ली से हो, तो थोड़ी हिंदी में हमें elevator pitch चाहिए. So, who is Sameer? Who is Sameer Dhanrajani? कहाँ से आए हो? क्या करते हो आप? एलिवेटर पिच अच्छी हो जाती है राघव अगर आप छोले भटूरे सामने रखते हैं दिल्ली वालों की पहचान ही वही है इनफैक्ट एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ छोला भटूरा फर्स्ट एक्चुअली बट थिंग्स असाइड लेट मी स्टार्ट विद दिस थिंग व्हिच आई नीड टू ओपन अप एट सम पॉइंट ऑफ टाइम राघव एंड maybe this is a platform I've seen your podcast and I've seen the leaders though I've met those leaders multiple times but I've seen a very different facet of them जो उनका जो चेहरा आप लोग लेके आए हो I've not seen that but which is a good thing because at some level what I keep on saying we all have to shed our inhibitions and that's the whole leadership is all about आज हम आपका वो चेहरा देखेंगे हाँ कोशिश करते हैं let's see how it turns out kind of a thing I've failed many times Raghav and that failure has been, if I put in a summary of 25 years of my career, I was destined to play cricket. And I can vouch, I played some damn good cricket. I was a captain of my school and cricket, college cricket team. And you can realize the kind of following I had during those days. Following from whom? Yeah, that's understood kind of a thing. And I also, during my college days, used to dabble into fashion show. But as a choreographer, I like it. So I've always been behind the scenes, and behind the scenes is really something right. I would say. What was the strategy behind that? Behind the scenes is all about strategy actually. But I have failed in both those sides of professions. One, I could never make into cricket because I felt at that point of time there is so much of intense competition, and fashion show was just, I would say, a money-making exercise for me just to. Right. Put the bills into my, I would say, bike fuel and also ensure. Which bike did you have? I had a Yamaha RX100. I like it, nice. So red color or black? Black color, nice. because that was the sought after color by the other gender actually. So Sameer, let's talk about your journey. आपकी start Delhi में होती है. You have always lived till you were like 21ish in Delhi only? Till I was 27. 27? Yes. So आप कौन से स्कूल में गए थे? Tell us a bit about that, 10th class के onwards. So Bharatiya Vidya Bhavan School, born and bred up in Delhi. In fact, my parents have been there ever since I think the independence happened. They live in somewhere Rohini or something? Jangpur Extension. Jangpur Extension. Yes. And मैं वहीं से in fact मैंने जो देखा है साउथ दिल्ली का एक कल्चर आज तक चेंज नहीं हुआ है. Only thing which has changed is पार्किंग की जगह आज भी नहीं मिलती जो पहले भी नहीं थी. And people still carry that snob value of South Delhi. But let me tell you, I think Delhi has changed. So, स्कूल मैंने भारतीय विद्या भवन कस्तूरबा गांधी रोड करसन मार्ग क्या कॉमर्स ली थी आपने? स्कूल में तो ऑफ कोर्स आई टुक इंजीनियरिंग एंड इसका भी एक रीज़न है इंजीनियरिंग क्यों ली मेरी क्लास टीचर ने पूछा एंड शी वाज आवर क्लास टीचर फॉर 10th एज वेल आई स्कोर्ड वेरी वेल इन 10th कि आप इंजीनियरिंग क्यों रहे व्हाई डोंट यू टेक कॉमर्स because I scored good in. You're very business minded, so I thought commerce. हाँ, so Sindhis का वैसे भी थोड़ा commerce है वो होता है. I was coming to that. So imagine my answer at that point of time. मैम मेरे friends ने सब ने engineering लिए मैं भी वही करूँगा. बढ़िया. And this is where I say how I would say you feel in terms of being very close to the friends, and this is the culture. You're still connected to those people? I am still very much connected. How over WhatsApp or how do you? We have a WhatsApp group. Achha. I meet them when I go to Delhi. I catch them wherever cities they are, and maybe in the background, Raghav, that was my first inkling of what networking should be. College sports quota because I used to play for my school. I represented Hindu college the first time I went in. Marks they get piche hat gaye. But when they took my travel, they said, okay, you should be the captain rather than just. You were the captain of Hindu also? I was the captain of the Hindu cricket team actually. And Ajay Jadeja, Vivek Razdan were actually my seniors. Okay. And I now realize actually, I mean, that was the golden period of my life because life was all about cricket, fashion show, and that's it. आप कुछ और भी बोलने वाले थे नहीं स्टडीज तो फिर कहाँ होती है स्टडीज उस टाइम पे सो श्योर
So now Sameer, let's look at you go to Hindu, and then we see you get into Gillette, FMCG. Now आप इंजीनियर बन रहे थे, फिर क्या हुआ ये समझ नहीं आया हमें. देखिए राघव, क्या होता है कि फेलियर्स एट एन अर्ली स्टेज मेक्स यू थिंक अबाउट मल्टीपल थिंग्स, एंड मेरी लाइफ में फेलियर्स कुछ ज़्यादा ही थे अर्ली स्टेज में. सबसे बड़ा फेलियर शुरू में कौन सा था? क्रिकेटर नहीं बन पाए. क्रिकेटर नहीं बन पाया. डिड यू एक्चुअली थिंक आप क्रिकेटर बन जाओगे? When you're representing not only your school, college, even I was representing university. तो आप उस लेवल पे आके the only level left is then playing Ranji. But you realize, Raghav, आज मैं कहता हूँ कि in a country of 1.35 billion people, 11 लोग are the best folks what we have actually, because आप एक गली क्रिकेट खेलो, आप एक कॉलेज लेवल खेलो, competition is very stiff. आपको लगे, and this is what I say even in a professional life, that you may be from your own lens be the master, you are just a minion. True. And that realization came to me much early in my life. Okay. So now you get into Gillette. Gillette, if I'm not wrong, आप marketing related कुछ रोल कर रहे थे? नहीं, मेरा actually it's very interesting, Raghav. I joined as a management trainee in Gillette way back in 97. अब हर 3-6 महीने में management trainees की एक meeting होती थी MD के साथ, Zubair Ahmed at that point of time. Zubair Ahmed. हाँ. What is he doing now? In fact, he's retired actually. Okay. At some level, he was also the MD for Smith Clean Beecham. So, a very renowned guy in the FMCG healthcare space. 6 महीने में जो मीटिंग हुई सारे मैनेजमेंट ट्रेनीज की, तो the first question he asked in that meeting, I'm looking for an executive assistant. Would you recommend who could be? And he asked that question open. मैंने आज तक कभी लाइफ में अपने स्कूल में कॉलेज में हाथ नहीं उठाया. For some reason, पता नहीं मैंने क्यों वो हाथ उठाया उस दिन. And he said, okay, because you're the only one who has put up the hand, let me try you. EA to MD at a stage of being 24-25, Raghav, was a revolution. I'll tell you why, because I was dealing with the business function heads जो मेरे से 30, 35, 40 साल बड़े थे. Not only in terms of age, but experience as well. The doyens of FMCG industry, and FMCG industry की एक खास बात मैं जो बताता हूँ जो काफ़ी लोगों को पता नहीं है. This is one industry which can actually make you learn corporate career in let's say 6 months. जो हम हिंदी में हसल बोलते हैं, रगड़ बोलते हैं, वो FMCG में day 1 से आती है. मान लीजिए आपको एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, वो प्रोडक्ट की एक डेट फिक्स हो गई, सब चीज़ें बैकवर्ड वर्क होती हैं. उस टाइम पे भी ऐसा करते थे आप? उस टाइम पे भी. एंड जिलेट हैड द बेस्ट ऑफ द प्रैक्टिसेस इन FMCG. उस टाइम पे हमने काफ़ी ये लॉन्च किए, एक्विजिशंस भी किए थे, एंड दैट वाज माय फर्स्ट acquaintance into the space of acquisitions. Parker pens, Luxor pens, Brown Silk Appeal, Brown के products थे जो जर्मनी की कंपनी. So tell me one thing, आप उस टाइम पे you were a student kind of person जो दोस्तों यारों के साथ enjoy कर रहे थे अपनी life, and then एकदम से you started talking to these big folks. क्योंकि आप ये थे MD को, तो I'm sure you were fixing up certain appointments, you were talking, you were making notes. तो क्या difference लगा आपको? What were the people at the top talking versus people who were just starting up, और difference क्या था? एक डिफरेंस राघव ये है कि एट सम लेवल हम जो मेच्योरिटी कहते हैं ना, मेच्योरिटी इज नॉट अ फैक्टोरियल ऑफ एक्सपीरियंस, एज, इट्स अ फैक्टोरियल ऑफ द काइंड ऑफ पीपल यू मीट. अब मेरे सामने अगर वो लोग हैं तो डे 1 मेरी रैपो या रिलेशनशिप नहीं बन सकती. यू नो दैट. जी. इट टुक मी सम टाइम कि इनको क्या चीज़ पसंद है कि अगर मैं इनसे अपॉइंटमेंट लेना चाहूँ ये मुझे मिले. एंड इट्स नॉट द फियर ऑफ MD, इट्स व्हाट आई से हुक आई नीड टू क्रिएट. उस समय MIS एक एस्पिरेशनल चीज होती है. एस्पिरेशनल क्यों? बिकॉज एनालिटिक्स नाम की कोई चीज़ होती नहीं थी. हम टॉक में 97, 98. अगर उनको वो डेटा डे एंड पे मिल जाए कि हमारी प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, टर्शरी सेल क्या हुई, बहुत बड़ी बात है. एंड 98, 99, 2000 में फिर सेल फोन लॉन्च हुए. आई रिमेंबर आई टाइड अप विद दैट कंपनी एंड दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपोजर टू टेक्नोलॉजी कि अगर आप शाम को अगर वो SMS आ जाए कि आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, आपकी स्क्यूज की पोर्टफोलियो की इतनी हुई, दैट वाज लाइक अ मेगा थिंग. वी डिड दैट एक्चुअली. वहाँ से मेरी रैपो रिलेशनशिप इन लोगों के साथ बनी. हाँ समीर, आज की सेल क्या हुई? हाँ समीर, आ यार चल बैठ के चाय पीते हैं, बताओ यार क्या चल रहा है. दैट टू मी वॉज अ रियलाइजेशन कि आपका जो रिलेशनशिप या नेटवर्क बनता है वो किसी को जानने से नहीं बनता. वो बनता है जब आपके में कोई एक्सपर्टीज हो. वो एक्सपर्टीज यूनिक होनी चाहिए, डिफ्रेंशिएटेड होती है, तभी लोग अपने पास आएंगे. नहीं तो
then it's just a vaporware. So now you are in the FMCG industry. You are sort of like as an EA, I would say HR/strategy. That's sort of the domain that you're operating in right now. Now, एकदम से you get into the tech side, and that was the time 2001-2 में आपने कब शिफ्ट किया था? So EA का रोल मैंने राघव 2 years किया, and that was like it gave me an elevated path to become the head of planning and research. And at 27, 28, I was the youngest senior manager in Gillette at that moment of time. In the entire Asia. You were managing people. I was managing people, I was managing team, the whole business planning and research. So हमारे Gillette में 428 के करीब, मुझे डेटा हमेशा याद रहता है, SKUs होते थे, उनकी जो प्लानिंग होती Gillette में 428 SKU? Yes, because they acquired a lot of companies also. Wow. हम ये सोचते हैं सिर्फ एक रेजर वगैरह तो रेजर के अंदर ही 82 वेरिएंट्स थे उस समय. अब तो नहीं है ना इतने. अब नहीं है. अब वैसे भी Gillette is a PNG brand. Yes. Wow. So Gillette में आप मैनेजर बन गए. Then Gillette से how do you transition to a tech kind of play? See, at some point of time, I give 2002 की बात है ना? 2002 की. I give a credit to my boss at that point of time in Gillette, Zubair again. He said, Sameer, we were traveling and he always used to make me sit with him, even during those times, sit in the business class when I was traveling. And just ask me like a friend, क्या चल रहा? मैंने सर 5 साल हो गए, तो अभी तक Gillette में क्यों है? अच्छा, पूछा आपसे? I said, what do you want me to do? He said, explore the world. I said, what do you mean explore the world? He said, something which you haven't tried. I said, sir, I can very well go to ITC or let's say HUL or other kind of FMCG companies, Dabur or Britannia. He said, no. वो तो सारा कुछ सारे लोग वैसे ही करते हैं ना. Why don't you take a path which is separate? And he said, think about that. वो पूरी फ्लाइट में I ruminated Raghav. कहाँ से कहाँ की फ्लाइट थी? मुझे जहाँ तक याद है, I think it was Bombay to Delhi की फ्लाइट थी. मतलब 3 घंटे की फ्लाइट थी. हाँ, 2-2.5 घंटे की फ्लाइट थी. तो वो फिर he used to always prepare for his stuff. वो बात करके he got busy and I started ruminating. मुझे याद है उस रात when I landed in Delhi, then I realized कि I think it's time to change, and within 6 months I changed. तो आपने कैसे, how did you find that shift? I think यही एक सोच होती है राघव, which I say, which we have to take out our mental blocks. What I call that, look, can you repeat in a new segment what you've done in the previous? And which is where I say many of the corporate professionals usually take a very risk averse approach. वहाँ से मेरी जो risk appetite बढ़ी कि नहीं 2002 में क्या चल रहा है, because .com boom खत्म हो गया था, bust हो गया था, and there was a revised interest in technology in 2002-2003. Genpact, Dell, ऐसी टाइप की कंपनियां इंडिया में आ गई थी and they were doing phenomenally well. But एक सबसे बड़ा intrigue था, ये करते क्या है? Because आप ये देखो, मैं FMCG में, मैं टूथपेस्ट बेच रहा हूँ, मैं शेविंग क्रीम बेच रहा हूँ. अब आपको एकदम से सोचना है कि अच्छा how this software works, and that actually fascinated me. And honestly, तब तक राघव, I had no idea what is analytics. Let me tell you. So नहीं तो अभी आप जिलेट में हो, आपको अपनी अगली कंपनी, अगली जॉब प्रोफाइल कैसे मिली? ना नौकरी था ना लिंक्डइन था, तो किसी को जानते थे आप या पेपर में कोई आपने पढ़ा, कैसे हुआ ये? मैंने एक्चुअली उस समय at that point of time I started applying to a lot of technology companies. कैसे अप्लाई करते हो? लेटर भेज के कैसे? So that's a good point what you said. Gillette में क्या मेरा एक अच्छा वो बन गया था कि I used to write lot of good mails. Okay. EA to MD का एक फायदा होता है कि आपकी जो इंग्लिश होती है ना वो पहले से इम्प्रूव हो जाती है, because you can't afford to make mistakes, whether in comprehension, whether in speaking or anything, because if that's not impeccable, right, you cannot stand in front of the big wigs and all. Right. To your point, मैंने इन technology companies को along with the CV, और CV की value कुछ नहीं थी, because Gillette and let's say a tech company is two different things. I started writing a lot of covering letters. अच्छा. Why I should be considered to work in this particular. मतलब आपने भी स्ट्रगल किया, ऐसा नहीं कि एकदम से लोगों ने ले लिया. मेरे ख्याल से राघव, मैंने कम से कम नहीं तो 100-150 कंपनीज को उस समय अप्लाई किया था, और कवरिंग नोट सबका कंटेक्चुअलाइज था. एंड उस समय आपको पता है कि लैपटॉप्स तो दूर की बात है, हमारे पास डेस्कटॉप थे, वो भी शाम को देखना पड़ता था, आपके बॉसेस या आपके वो नहीं है तो फिर तब मिलते थे. हाँ. तो आप उस टाइम में आपकी एज कितनी? 27. तो शादी हो गई थी आपकी? शादी मेरे उसके 1 साल के बाद हुई एक्चुअली. अब तो मतलब घर पे क्या माहौल था कि आप जिलेट में सेट हो गए, लड़का इतना सही कमा रहे हो, घर वाले बोल रहे हो पागल हो गया तुम क्या? मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू थिंक फ्रॉम हाउ वाज द फैमिली रिस्पॉन्डिंग,
टेक उस टाइम पे नई चीज़ थी. बिल गेट्स वगैरह लोगों ने सुना था, इन्फोसिस विप्रो की बात हो रही थी, बट माई अंडरस्टैंडिंग इज टेक वॉज स्टिल नॉट टैंजिबल. FMCG was tangible कि देखो हमारा बेटा जिलेट में है. You know what I mean, right? So I think Raghav, that way, if I look at my family, I'm actually very blessed. That way, my parents never cautioned what I'm doing. Seriously. Never cautioned. And this is, when I say this is oxymoronish, क्यों? They both come from education background. Wow. They retired as principals of government schools. Really? So imagine, Wow. वो जो diligence और discipline होता है, वो मेरे में आया. उसके बाद भी उन्होंने कभी मुझे ये नहीं बोला कि तुम्हें क्या करना है, तुम ये करो वो करो. एंड दिस इज समथिंग व्हाट आई से इज ऑलवेज आई रियलाइज दैट गोइंग बैक वाज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर मी टू स्ट्रगल आल्सो ऑन माय ओन, टू आल्सो पिक अप द चॉइसेस ऑफ द करियर आई ऑलवेज वांटेड. सो लॉट ऑफ पीपल, राइट, दे थिंक कि इनिशियली आपका करियर है, डोंट स्टे विद योर पेरेंट्स. देयर टेक इज कि यू नीड टू ग्रूम आउट, बट लुकिंग एट योर जर्नी फॉर अ गुड 10-12 years initially of your career, 10 तो at least, you were with your parents. ट्रू, राइट. True. सो कुछ फायदा हुआ आपको, उससे क्या लगा आपको, क्या बेनिफिट हुआ आपको लाइफ में? सो एक बारी की बात बताता हूँ राघव, एंड दिस इज एनेक्डोट. द डे आई वाज सिलेक्टेड एज द कैप्टन ऑफ द यूनिवर्सिटी टीम, हिंदू कॉलेज में, इट वाज अ बिग थिंग. आई मीन, आई थिंक इन माय ओन मूड, जिस दिन मैंने पार्टी की थी फ्रेंड्स के साथ, दे ऑल सेड यू हैव अराइव्ड. एंड मैं बाइक बड़े आराम से चला के साउथ दिल्ली के रोड्स पे, लोधी रोड, जोरबाग वगैरह, आई वाज मूविंग तो टुवर्ड्स सड़क भी खाली होती होगी. जंगपुर एक्सटेंशन. रात की बात है, 11:30-12 मेरे ख्याल से बजे होंगे. एंड आई फेल्ट आई हैव अराइव्ड. आई लाइक इट. डोर खोला, बेल बजाई. उस समय यू नो चाबियां नहीं मिलती हाँ, थी, हाँ. पेरेंट्स के साथ रहो, चाबी नहीं मिलती. हाँ. माय मॉम ओपन द डोर एंड आई सेड, मॉम आपको न्यूज़ देनी है. इट वाज 12ish. उस समय डैड भी आ गए. कहते न्यूज़ वगैरह छोड़ो, कल सुबह जो दूध का बर्तन रख दो और दूध वाला आके दूध देना चाहिए. देन आई रियलाइज गोइंग बैक टू माई रूम दैट लुक, यू डोंट टू हैट्स ऑलवेज, वन आउटसाइड वन इंटरनल. मैं उनके लिए वही हूँ एज अ सन जो मैं 20 साल 21 साल पहले था. दिस होल थिंग दैट टेक योर टैग्स आउटसाइड ऑफ द होम which I've always carried. I mean, even after marriage, I've never discussed any office stuff with my wife or my kid. Never. My daughter. Never. That's been an unspoken thing from day one. Because I realize ये जो दो facets होते हैं ना लाइफ, ये अलग है. और ये जहाँ मिक्स करते हो आप, confusion और trouble वहीं से शुरू होती है. I've seen in many of the cases the spouses know more about a office or a bosses. I don't think so that's required. सो आई थिंक ग्राउंडेड जो आपको लगता है कि आप बने, पेरेंट्स हैव अ वेरी बिग रोल टू प्ले इन दैट. सी, ग्राउंडेड एक तो अपब्रिंगिंग के हिसाब से, दूसरा राघव वही होता है कि जब आप ये करियर्स जब आप पिकअप करते हैं, दीज आर इंटेंसली कम्पिटिटिव करियर्स, क्रिकेट एंड फैशन शो, सबको व्हेन दे आर बोर्न ना, मुझे या तो एक्टर बनना है या मुझे क्रिकेटर बनना है. इंडिया में सबको एक यही फैसिनेशन है. बट व्हेन यू हिट द लोएस्ट पॉइंट एंड से नहीं, आप नहीं सिलेक्ट हो सकते, नहीं आप इस फैशन शो में नहीं जा सकते, देन यू रियलाइज कि बॉस देयर इज अ डिफरेंट वर्ल्ड. आपको फेलियर्स जितनी जल्दी आ जाए उतना अच्छा, लेकिन वो फेलियर्स समझ में आने चाहिए. हम एक वो जो हेलो इफेक्ट में रहते हैं कि नहीं यार चलो क्या हुआ. हर एक चीज के लिए हर एक आदमी नहीं बनता. दिस इज वेयर वी नीड टू रियलाइज, एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज नाउअडेज व्हिच आई कीप टेलिंग एस्पिरेशनल्स that look, अगर किसी ने एनालिटिक्स पिकअप किया, नॉट नेसेसरी यू हैव टू पिक अप एनालिटिक्स के एडजेसेंट भी देयर आर रोल्स लाइक डिजाइन थिंकिंग, कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस, बिहेवियरल. These roles are much more lucrative, much more enriching and challenging as compared to even analytics. नहीं, बट हमें वही दिखता है कि डेटा इंजीनियर बनना है या स्पेशलिस्ट बनना है. नहीं, ट्रू. लेकिन आप में वो नहीं है गम्शन, आप में नहीं है स्किल सेट, तो आप नहीं बन सकते. सो नाउ फिर आपने टेक में 5-6 साल काम किया, अलायंस, जेनपैक्ट में. And then we see कि at the age of 32, if I'm not wrong, 32, right? Right. You become the youngest head of any captive when you become the head of Fidelity. ये थोड़ा समझ नहीं आया, कुछ गेम की जानते थे किसी को वहाँ पे, कोई सिफारिश थी, क्या था, मतलब कुछ गेम लग रहा है. जब अब आप एनेक्डोटल में देखो, लाइफ में ना सबको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है. आई थिंक दैट वाज माय अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम, एंड आई कीप ऑन सेइंग दैट समटाइम्स a chance meeting with one of the stakeholders of Fidelity. I was coming back from a flight from US and Emirates flights. We caught up from Dubai to Bangalore. This guy was traveling from
Florida. 2009, 10, 2007. 7. And this guy said he's trying to build a captive actually in Bangalore. I said, okay, what do you have? He said, nothing. I have a piece of land and I'm looking for people. Nice. I gave him a card. We met during the flight, chatted. After that, we had our own paths. He called me up 2 days later. He said, I want to meet. I said, okay. Then he asked me, what is that I'm doing? I said, this is what I'm doing. He said, would you like to be the first person in this particular engagement? I said, what is the engagement? He said, I want you to be the country head. मैं फिर खुश मैंने कहा अच्छा country head करना क्या है? So he said, okay, let's discuss the offer. Imagine, Raghav, I had an offer. और मैंने पूछा भी नहीं रोल क्या होगा. Within 30 days, I joined. He came back again. 30 days के अंदर. 30 days के Notice अंदर. period नहीं था आपका. 90 days का होता था Genpact में, but I said okay, let it. Genpact में एक आध कोई 2 लीडर्स जो आपने बहुत इंस्पायर किए उन्होंने आपको. I think Genpact. उस टाइम पे बहुत टॉप के लीडर्स थे Genpact में at that time. आप जेकिस Genpact की हिस्ट्री देखो राघव, it's a mecca of analytics, and I keep on saying from the time you walk to a washroom to the time you walk to the canteen, everyone is breathing, speaking analytics, and they want you to be hands-on. This was my biggest grounds up learning in Genpact, that if you can't make models, if you can't know how to peel the data, if you can't make a sense of how to draw insights, you cannot be successful. True. And this is what I keep on saying even to today's professional, that analytics looks glamorous from outside. It's not. It's not. It's not for the faint-hearted. It's actually boring in the beginning itself. It's not boring, but the path to attain supremacy in analytics is like... You need a lot of patience. Absolutely. Absolutely. Right. So now you are in Fidelity, 32. I don't think so you really knew how to set up a captive. मेरे पास तो टीम ही नहीं थे कुछ. क्या किया? The first day I landed, he called me up. He said, "Come to the hotel." He was staying at Oberoi, Bangalore. I said, "Okay, fancy office होगा." So we drove. मेरे को जहाँ ले मैंने कहा तो मेरा Genpact का office है Electronic City में. So he turned towards phase 2. Genpact office was in phase 1. Then I realized, okay, he said, "Stop the car," and there was an open land. He said, "That's your office." So what do you mean? He said, "You have to construct the office and build the team." Construct we. Exactly. This is how the whole journey. Construction also. Yes. So till that time, the whole idea was that, look, Fidelity at that point of time was very keen on offshoring because they had set up another center of Fidelity investments, all those things. And they said, look, we need to be the pioneers in being a captive. And captive comes with a negative word, by the way, and I'll tell you how this whole thing. So मैंने वहाँ से देखा अच्छा ऑफिस भी बनाना है. So I said, what do you mean? He said, no, you have the budget, give me a plan, how do you, and bring your own team, as in hire people. So वो जो पूरी leadership team, वो जो पूरा office, and within those you can't escape also offshoring work back to India, gave me enough exposure how to set up a shared service center. And that learning was very hard. Because when you're hiring people, Raghav, what is that you have to show them? Name Fidelity doesn't strike a bell, which is still fine, but office नहीं है मेरे पास. कुछ भी नहीं है. एक plan है कि अच्छा हम 2000 लोग 1000 लोग सेटअप करें. And that's where you realize that people then start understanding if you have a vision. So Fidelity के अंदर जो इनिशियल आपने लीडरशिप हायर की वो आपने किस बेस पे की? आपके दोस्त थे या आपको मिले थे या फिर Fidelity was paying well? How did you attract that talent? Leadership level? None of these. Then? In fact, I tried getting some of the people I knew, but they escaped. Okay. They thought चलेगा नहीं या पता नहीं क्या होगा. They never believed कि ये कैप्टिव क्या है, because उस समय बहुत कम कैप्टिव्स थे. आज हम बात कर रहे हैं. तब कितने GCCs होंगे? मुश्किल से उस समय उसमें होंगे मुश्किल से 100, 125, 125, 100. और हेडकाउंट भी ज़्यादा नहीं होंगे. हेडकाउंट भी ज़्यादा नहीं थे. फिडेलिटी था और वो दूसरी आर्म थी. अमेरिकन एक्सप्रेस था, HSBC था, बट छोटे छोटे. एंड कॉन्सेप्ट वाज नॉट वेल रिगार्डेड इन द इंडस्ट्री. सो एनीवे, इन लोगों को आई थिंक एक विजन देना था, दैट लुक, इफ यू वर्क being the owners of your business, that will pave your career a long way in terms of understanding and knowledge. मतलब career path दिखाया आपने. एक vision ही दिखाई थी बस. That's it. But now in the hindsight, I can tell, I give them roles of their lifetime just like what I got. उनमें बस एक वही मैं देख रहा था कि do they have what I call a gumption or the wherewithal कि आज अगर मैं एक HR leader उठा रहा हूँ, can she or he
lead a 2,000 member team at some level. So when you, so how long did you work in Fidelity? 5 years. So when you were 32 versus when you were 37, आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो आपको assumptions थी when you initially became the head of a captive of a site of Fidelity, and when you were getting out of it when you were 37, क्या सीखा आपने जो यार वो 32 की उम्र में ना मुझे काश पता होता, मेरी वो गलतियाँ नहीं बोलूँगा बट पता नहीं था. सी राघव, ये इनिशियल स्टेज पे हमारी एक बहुत बड़ी व्हाट आई कॉल फॉलोसी है दैट वी कैन डू ऑल. हाँ, ये जितनी जल्दी रियलाइज हो जाए हमारी उतना अच्छा है. एंड आई कीप ऑन सेइंग व्हेन आई स्टार्टेड माय फर्स्ट रिव्यू विद माय बॉस, ही आस्क्ड मी, ओके व्हाट्स द टीम यू गॉट? आई सेड 3 member. So he said, okay, what are you handling? I said, I'm handling HR, I'm handling operations, I'm handling a bit of quality. He said, then what is left? Why don't you handle everything? He made me realize that, look, unless you get those kick-ass hard hitters, you will not succeed. And that realization came to me at 32 itself. Okay. First 6 months, I spent nothing but building the team. अब captives जो शेयर्ड सर्विस सेंटर्स में जो रोल्स होते हैं राघव, एट द टॉप लेवल, उस समय की बात बता रहा हूँ जी. आज भी एक इट्स अ ट्रूथ, हैव अ लिमिटेड शेल्फ लाइफ. हाँ, एंड ये भी एक नजरिया है, आप करने को वो 10 साल कर सकते हो, या फिर आपको लगता है बॉस नाउ यू हैव हिट द ग्लास सीलिंग, कुछ और करना. कुछ और करिए. आप जाके कुछ भी, उस समय तो मैनुअल चेक्स होते थे, तो मैं लास्ट 6 मंथ्स में क्या कर रहा था, मैनुअल चेक साइन करता था, टीवी देखता था, मेरे केबिन में टीवी था. अच्छा. ये को बुलाता था, अच्छा क्या सर आज लंच है आपका इसके साथ, आज आपका ये टी है. बाद में मैं 6 महीने रियलाइज कि मैं कर क्या रहा हूँ. दैट रियलाइजेशन गिव मी इनफ इंडिकेशन दैट लुक आई शुड मूव ऑन. Then you went to Cognizant and set up the analytics practice. And that time Cognizant itself was a big deal. But it was services, pure play services. Fidelity में even though back office था whatever, सर्विसेज वाली मेंटालिटी नहीं थी बिकॉज आपका कोई क्लाइंट नहीं था. तो ये ट्रांजिशन कैसे किया फ्रॉम योर सेल्फ बींग द क्लाइंट दैट इज फिडेलिटी टू गोइंग ऑन द सर्विसेज साइड जहाँ पे यू आर रनिंग आफ्टर रेवेन्यू? आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग व्हाट यू आस्क्ड राघव. एक चीज़ है विच आई रियलाइज विच हैज़ बीन अ कांस्टेंट इन माय करियर इज अबाउट टेकिंग रिस्क. एंड दिस रिस्क टेकिंग एबिलिटी केम फ्रॉम द टाइम व्हेन आई मूव फ्रॉम Genpact to Fidelity. And then I started realizing during the last few months of Fidelity that, and this is something my learning and also I want to share with, I would say, whosoever wants to be part of this, that our career, Raghav, is not about 10 years, 15, 30, or 20 years. It's 30, 35, 40 years. And you can't afford to say to your kids, to the people you've been with them for years, that यार मैंने एक ही जगह ना 15-20 साल तो काम किया बट मुझे कुछ और करना चाहिए था. सो वो रियलाइजेशन मुझे उस समय आ गई थी कि बॉस इफ आई डोंट स्टार्ट टेकिंग रिस्क, एक मैं अपने आप को क्या बोलूंगा. सेकेंड, एट सम लेवल इट्स ऑल्सो अबाउट दैट ओके यू हैव डन शेयर्ड सर्विस, व्हाट इज द नेक्स्ट बिग बेट, मे बी ट्राई अ P&L. रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है, बट व्हाट द हेक, लेट्स डू इट. एंड मेरे साथ कुछ सेरेंडिपिटीज भी हुई लाइफ में. मैं हमेशा कहता हूँ कि एट सम लेवल आई डोंट बिलीव इन दिस डेस्टिनी लक, but somewhere things conspire. Obviously, right. Again, a return flight. I was coming back from Fidelity, Jacksonville, Florida. वहाँ से दुबई की फ्लाइट. दुबई का बहुत शौक है आपको, अभी भी दुबई में थे? एमिरेट्स के साथ पता नहीं मेरा क्या है कुछ मतलब एक एमिरेट्स और मैरिड के साथ I have a long lasting relationship when it comes to loyalty and of course with my spouse. So these are the 3 things I always have a loyalty towards. वहाँ पर I met Frank D'Souza, the CEO of Cognizant. Wow. In fact, we met. He's a legendary figure. He's a very big figure. Emirates Lounge, we met. We just made a connection. Only business class देखा मैं, आप shocking तो business class. Some of the perks, Raghav, you have actually when you're working with the corporate. Now I can realize when you are an entrepreneur, क्या होता है. What I say, going to the ground level. And interestingly, we hit it off in the very first 10 minutes. Achha. What I found, Raghav, in him, and he was also a young, charismatic leader. And I can vouch that the moment you, and there are some leaders in the industry, you talk to them just for even few minutes, you realize that, look, they're in a different league and that charisma is so magnetic. Right. You always say, okay, can I work with them or the company? At that point of time, there was an acronym called SMAC. SMAC. Social Mobile Analytics Cloud. He said he would lead that SMAC
business units because he felt this way back in 2011 that these four technologies will be the game of the future. Right. And he said he's looking for a person to lead the A piece, which is the analytics piece. And I said, can I make myself available? Acha. And we talked. But he said, look, why don't I make you meet with the leaders? And then you and we should take a call. Raghav, trust me, within a week, I had an offer letter. Sahi hai. And this is where I realized that the same aspect of how the vision Right. of Cognizant leaders, I met about 7 or 8 of them, some in person, some over virtual call. All of them had that hungry vision. Any particular leader you want to talk about? Mahesh. He Mahesh, was full name? Mahesh Venkatswaranan. Right. In fact, now he's moved on, and in fact, he's living what I call the second phase of his life. Very interesting guy, grounded, humble to the core. He was with Cognizant when I joined for almost 16 years, Wow. or rather 15 years at that point of time, and made the company what it is today, kind of a thing. And his particular ability is something I can relate. He was changing roles every few years from his own will. Wow. He could have just stayed as an SBU head for long now, but he was the SMAC leader. And I was reporting into him. And the first month I realized, Raghav, this is good to hear. I came from shared service side, and here it was a P&L. The first review I had with Frank and Mahesh being there, okay, how does your P&L look like? Pipeline. And I had no clue. I said, what is P&L? Next 30 minutes was the reprimand of my life I got. Top, and I was told 2 things. If you don't understand, or rather 3 things, in IT services or revenue generating firms, if you don't know 3 things, you are doomed. Top line, bottom line, SGA. That's it. After that, Raghav, I made sure that I go back, touch up my accounting basic, get the whole 9 yards of what a P&L looks like, and better deliver. This is where I realized how different are the industry when you move from one to another. Right. Nuances, characteristics, the whole ability to relate to the people. And that gives you a lifetime of learning, actually. So from Cognizant, right, which was already at a multi-billion-dollar stage, you go to Fractal as Chief Strategy Officer, which was at that time, now it's a billion-dollar company on its own. But at that time, if I'm not wrong, the revenues were around 30, 40 million or 50, I don't know what I can understand. So कुछ था ऐसा कि what made you interested in Fractal? At the same time, what were the learnings from Cognizant you wanted to use at Fractal? So, Raghav, वही जो चीज़ जो मैंने आपको बताया कि the risk-taking ability then came very well ingrained in my head. And I also remember that the very reason we could create a very formidable business unit in Cognizant for analytics, and business intelligence and data warehousing was a different one. This was all about analytics, data science. Insights, proper. Insights was because of the team I could rely upon. जी. I have a pride in saying that all these leaders are actually the who's who in the analytics of the technology industry. Yeah, I think Cognizant के बहुत लोग analytics industry में top पे हैं. And the reason is simple, Raghav. Look, when you take out the egos which comes with being the corporate Right. jobs and really say that, look, you would like to create one large vision for the company, which is perform to the best. I remember a time I used to travel very often, and the SBU heads of Cognizant were the likes of the BFS head or let's say insurance head, and these healthcare heads, these guys were leading a portfolio of 4 billion, 3 billion. Wow. And imagine Wow. the nature of they being grounded. If I'm coming to Chennai tomorrow Wow. and I wanted to meet them, Rajesh, can I please come and meet you? And I'm calling that person at 8:30 in the evening. He's looking at his calendar, no EA, no secretary. Said, okay, Sameer, when are you coming? I said 11:30. Okay, 12:30. Let's catch up for lunch. This is the power of Wow. what I call collective leadership. Fabulous. When everyone wants to make a company go to the next level. And then you realize that if you take aside ego, political overtures, and this whole aspect of, okay, सिर्फ मैं हूँ, things can go really big. तो Fractal में कौन सी चीजें थी ऐसी जो you tried to incorporate or thought you would incorporate that you learned from Cognizant other than team building?
I think a lot of learnings. Again, the canvas, to your point, Raghav, was small, of course. But the good part about Fractal, one, is the leadership. Shrikant, a maverick guy who thinks ahead of his time. And he's been doing analytics way before I even knew what analytics as a word is. They started way back in 2000. Fractal? Yes. Wow, I didn't know. Yes. So like Musimma se bhi pehle. Yes. So let me give you some background. Yeah, please educate me on that. So Shrikant and Pranay were batchmates in IIM Ahmedabad. Okay. And they did their stints in different banks. ICICI Bank was the time they met and they said, we should do something in analytics. That's 2000 year. Wow. And there were four, and eventually four co-founders. Eventually, then Pranay and Shrikant were the co-founders. They actually were funded. Many of the folks don't know, by Onida. Okay, the TV. Mr. Gulu Mirchandani. Yeah. He invested in this company way back in 2001, 2002 Wow, time. didn't know that. And at that point of time, they did projects with HDFC Bank, ICICI, starting with the banking, because banking were the bank folks. But Indian clients. Indian clients. Then they ventured into US, they ventured into Singapore, Wow. kind of a thing. But at some level, even after 16 years when I joined, I realized that they were stunted in terms of the growth, the momentum. And the best aspect for them was that they had got 100 million funding from Khazana, the Malaysian sovereign fund. And I was given the mandate, spend this. Lovely. But spending by investor is always what I say, careful spend. Yeah. And the whole aspect was that, look, how do you ensure that the growth momentum by virtue of this fund becomes accelerated? And this to me is also a learning when I look at startups today. Funding is the first milestone to become big. You don't arrive unless you know how to spend the money. And spending money, Raghav, is an art. Because if those punts you take do not give you the monetization, it's a fud. It's a fud. And that's where I think we took some bold, calculated calls. I want to give one example over there, Raghav. Yeah, please. Now, this goes back to analytics AI industry as a whole, and we'll talk about that also. Actually speaking, analytics AI industry is very understated. Understated? Understated. क्या बात कर रहे हो? From the sense that we don't want to market ourselves. Really? I'll come to that. So, 17 years, Fractal was an unknown commodity or a brand in the entire space. Let's go back 6 years back. I'm talking about 2016-17 time frame. Now, when they got the funding, the first thing I realized talking to Shrikant, and he was also of this view that our positioning has to be arrowhead. What do we stand for? There are dime and dozen other analytics company. For the first time ever, we got a multi-year ad placed in the front cover of Economist. Wow. Must be pretty expensive. More than the expensive, while we negotiate, and you know when a Sindhi negotiate kind of a thing, there are a lot of things which can happen, and good part was that Shrikant pitched in, we had a CMO, she pitched in, collectively. But Economist was stunned at that point of time that we went in for not 1 year Raghav deal, 2 years, 3 years deal. Damn. So you can imagine the economies of scale, but ambition. That we want the brand to resonate amongst the CXOs, the top echelons of the corporate. And you changed the brand from Fractal to Fractal AI or something, right? I also saw that shift. पहले services थोड़ा ज़्यादा था, फिर वो एकदम से AI में एक shift आया. So मैं बताता हूँ चेंज क्या था राघव. देखो एनालिटिक्स जब कोई भी एक टेक्नोलॉजी कमोडिटाइज होने लगती है उसको आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ता है. प्रोडक्ट बनाओ लेकिन उसको आप पिवट करते हैं. सर्विसेज प्रोडक्ट नहीं बना सकते. तो सर्विसेज में क्या है, आपको मार्जिन भी चाहिए, आपको प्रीमियम भी चाहिए और आप डिफरेंशिएटेड भी होने चाहिए. टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए आपको. टेक्नोलॉजी भी. आप कितनी बार अपनी ब्रांडिंग चेंज करोगे, कितनी बार कलर स्कीम फॉन्ट वगैरह चेंज करोगे, नहीं चलता. कस्टमर्स आर स्मार्ट. देन यू ट्राई टू से ओके व्हाट इज माय पिच टू द कस्टमर. वी चेंज द पिच, वी चेंज द नैरेटिव टू द कस्टमर that we are just not about AI or analytics, we are AI, engineering and design. Nice. Trifacta of business transformation. And that was one of the seeding for my book also. So, Sameer, if we talk about this book, आपने किताब भी लिखी थी, थोड़ा बताइए कुछ किताब के बारे में. देखो कुछ चीज़ें कई बारी it's easy to fathom but difficult to
execute. हाँ And some of these things have to have blessings for you. जी And that blessing came in the form of Mr. Vikas Gupta. I met Vikas way back in 2013, if I'm not mistaken. Cursory meeting. He was leading a big, I would say, publishing company from India point of view. And we met cursory to discuss some business opportunities. And when he tossed, and that was the time I was in Cognizant, he tossed me, you should write a book. And I laughed. I said, Vikas, मैं नहीं कर पाऊंगा. Anyway, things passed. But when I joined Fractal, during one of the conversation again with him, he said, now it's time for you to write a book. I said, let's do it. But this is where I say, just having a sponsorship doesn't work out. He asked me first thing very bluntly, do you have an idea? And I was blank. right Because book में अगर आपके पास idea नहीं है, हाँ then you are just like any other Me Too run of the mill. हाँ And that made me ruminate. That made me kind of cogitate. And then I went back to him and I said, I have an idea. And he liked the idea. The idea is simple and came from some of the facets I realized while talking to the customers, prospects during my stint in Fractal. And this has also a backing of a thesis, Raghav, what I call challenge the decision-making process. As a human being, you and me take about 60 odd decisions on any given day. right इसके बाद क्या करना है, हमारा करियर का प्लान क्या है, रिलेशनशिप स्टेटस क्या है. सो ये डिसीजन हम रोज लेते रहते हैं. एंड इफ यू सी, मैं और आप जो डिसीजन ले रहे हैं, जो भी बाहर के लोग ले रहे हैं, दिस इज ऑल बाय इंट्यूशन, गट, या उसने कहा था. नाउ दोज डिसीजंस आर बीइंग टेकन बाय एल्गोरिथम्स. आप इसके बाद अगर आप कुछ Amazon पे जाते हैं, इमीडिएटली लोफर्स खरीदते हैं, लोफर्स के साथ आपको 30% स्नीकर्स पे डिस्काउंट मिलता है. आप 2 मिनट रियलाइज करने लगे, ओ आई शुड बाय दिस ऑल्सो. बट that algorithm is actually making you think. yes Buy that impulse. definitely Then you say, अच्छा ये भी खरीद लेता हूँ. Algorithms are governing our life. This is where the genesis of that book came in. That look, how AI analytics can actually challenge your decision making. That's where it happened. Wow. Actually. So now Fractal में I'm sure you're earning well and all of that. आपने 15-20 साल इंडस्ट्री में काम किया एंड एक स्टेबिलिटी थी लाइफ में, राइट. बट देन वी सी कि कुछ एंटरप्रेन्योरियल करने का मूड बैठता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी की जो आप बात करो एम्पलीफाइड बाय 100x. क्या हुआ, मतलब बोर हो गए थे या फिर लगा कि बहुत मतलब अलग ही गेम चल रहा है इंडिया में, लेट्स टाइम टू फ्रंट एंड, व्हाट हैपेंड? I think सच बताना, घुमा आपको सच बोलना है. sometimes I realize that you see yourself and then say, okay, are you getting that traction, what you really wanted? And with all due regards, let me tell you, I got so much of traction after writing that book, which even exceeded my expectations. It's not about brand or it's not about, but somewhere you struck a chord. And then you realize that, look, it feels sometimes a bit intimidating to the people around the ecosystem. Ideally, it should not, but human psychology and behavior is all about insecurity, intimidation. And दूसरे को जब हम कई बारी खुश ज़्यादा देखते हैं ना, हम खुश नहीं होते हैं. And that's a truth about corporate life as well as professional life. While COVID has taught us many other things, but I think still the human behavior hasn't changed. And moreover, 20 years, 22 years of career is also an inflection point. And I was talking to during one of the dinner conversation with my wife, क्या करना चाहिए? She said, तुमने सारी जिंदगी तो रिस्क ली है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? So I said, देखो, GCC में काम कर लिया, थर्ड पार्टी में कर लिया, बुटीक फॉर्म, नीश फॉर्म में कर लिया, अब उसके बाद बचा क्या है? She said, क्या बचा? मैंने कहा कंसल्टिंग या एंटरप्रेन्योरशिप. She said, कंसल्टिंग तो तुम 50 के बाद भी कर सकते हो. That's where I said, the option is easy then. Yes. That call came in and I said, look, yeah, maybe this is a time to take a plunge. And Raghav, this is where I've seen most of the entrepreneur's journey. It's all about internal call. वो कभी भी आ सकता है, beginning of your career, बीच में, yeah, at a stage where you say, okay, it's a midlife crisis. But did you have an idea or you were like, मुझे कुछ खोलना है अपना, अब वो क्या खोलूँगा, let me figure it out. How was that? That's again a good thing what you asked, because honestly, कोई plan startup का fool proof नहीं होता. हाँ,
तो हो नहीं सकता। Then there is a word in English, audacity. गट्स। आपको वो लेना। मैंने कहा नहीं, मुझे एक चीज दिख रही है मार्केट में which is a gap that analytics AI, Raghav, is being done, but the adoption is not there. Why the adoption is not there? I'm talking about 17, 18. 19 kind of a time frame. 19. 4 साल हो गए almost. Adoption क्यों नहीं है? Because there is a gap between what a data scientists want to say or convey versus what is being thought by the corporate leaders. By the business. By the business leaders, you're right. And that gap is what I call evangelization. That there are not enough people in the market today from analytics AI who can actually go and sit with the CXO, senior leaders, executives and say, look, I'll tell you what is the art of possible with AI. उनके सामने अगर मैं jargon बोल दूंगा ना तो वो नहीं चलेगा। धंधे की बात करनी है basically. धंधे की बात, मेरा टॉप लाइन कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, मेरी एफिशिएंसी, मेरी प्रोडक्टिविटी, मेरी एफिकेसी कैसे बढ़ सकती है, घट सकती है, क्या हो सकता है थ्रू एनालिटिक्स। एंड दैट रियलाइजेशन केम इन हाउ। इसमें भी कहते हैं ना हर चीज़ें कैसे लाइन अप होती है। जब आप किताब लिखते हो, सक्सेसफुल हो जाती है, तो किताब के बाद क्या होता है? लोग आते हैं, पूछते हैं। लोग आते हैं, अच्छा भाई लेक्चर दे दो। लेक्चर देने के बाद TEDx वगैरह भी काफी किया आपने उस टाइम। 5 TEDx talk I have done kind of a thing. And फिर लोग कहते हैं कि अच्छा मेरे यहाँ जो ऑफिस में बोलो। फिर एक टाइम आपको लगता है यार प्रो बोनो क्यों कर रहे हो आप हर चीज़। Then I said, I need to monetize. So I created a workshop model, and this is where I always, I would say, lot of this thing. I used to ask Vikas what I should be doing. He said, boss, हर एक चीज़ का ना एक threshold होता है, उसके बाद when people take you for granted, तो उसको सोचो क्या करना है. Then I realized that the workshop and master classes needs to be monetized. Definitely. You create a property. And if the property has a pull, people will pay. Obviously. And this is the first thing I did as a part of AIQRATE. That look, create a thought leadership which is up there in terms of resonance. जो मैं बोल रहा हूँ, क्या वो एक CXO को, एक CMO को, एक CIO को समझ आ रहा है from analytics point of view. Let me tell you, Raghav, ये easy नहीं है. बहुत मुश्किल है। आप उसमें jargons के अलावा आप क्या बात कर सकते हैं? बिजनेस की, बट बिजनेस में अगर आप कंटेक्चुअलाइजेशन नहीं कर रहे हो, अगर आपके पास यूज केसेस नहीं है एनालिटिक्स के, एवरीथिंग इज अ फ्लफ। यहां पर जो मैंने फ्रैक्टल में काम किया, जेनपैक्ट में किया, फिडेलिटी में एनालिटिक्स का किया, और इवन कॉग्निसेंट में जो सबसे बड़ा, आई हैव अ अंडरस्टैंडिंग वो 3000 प्रोजेक्ट जो मैंने और मेरी टीम ने एग्जीक्यूट की अक्रॉस 42 डिफरेंट फंक्शंस एंड 17 इंडस्ट्री, कैन आई नाउ एग्रीगेट एंड कम आउट कि इसको क्या चाहिए। राइट। वो चीज़ जब आप सोचना शुरू कर दो तो वो मॉडल इन टर्म्स ऑफ एडवाइजरी कंसल्टिंग अपने आप निकल आता है। So AIQRATE, I think we obviously know about it. There's one concept that everyone in the analytics industry has been talking about these days, 3AI. तो ये 3AI का आपके पास थोड़ा बहुत एनालिटिक्स में कुछ ना कुछ हो रहा है। कहाँ से सुना वैसे 3AI के बारे में? मैंने 3AI के बारे में आई थिंक वहाँ पे हमने कुछ ना कुछ तो किया ही हुआ है 3AI। So I'm just saying from the viewpoint of the people who are listening, right? एक ग्रेटर ऑडियंस ने जो एनालिटिक्स में या फिर इस इंडस्ट्री में काम करिए, कुछ लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं, कुछ लोगों ने सुना है, हाँ देखा है, लंदन पे देखा है, यूट्यूब पे देखा है। 3AI जब आप लॉन्च कर रहे थे, कुछ चीज़ें एनालिटिक्स में चल रही थी, आई नॉट नेम देम, बट कुछ चीज़ें हो रही थी एनालिटिक्स में, फ्रॉम अ कम्युनिटी व्यू पॉइंट या फिर फ्रॉम अ पब्लिकेशन व्यू पॉइंट, व्हाटएवर यू कॉल इट। सो ये 3AI का आइडिया कैसे आया, और जब आपने आइडिया एनालिटिक्स लीडर्स को पिच किया, क्योंकि आपको उनका बायन भी चाहिए था ना, उनके बिना तो कुछ हो नहीं सकता, तो उनका क्या रिसेप्शन था इस बारे में? राघव, इसमें एक एनोलॉजी लूंगा। आई एम अ बिग फैन ऑफ बॉलीवुड, नॉट बिकॉज आई वॉच मूवीज, बिकॉज आई सी व्हाट्स हैपनिंग फ्रॉम द आउटसाइड, नॉट द करण जौहर टॉक एंड ऑल। आउटसाइड में देखिए क्या है, देर आर 2 एस्पेक्ट्स। वन, देर इज अ नेपोटिज्म टॉक, then there are people who come in from outside like Ayushmann Khurrana, Irfan, the late Irfan, or let's say Shah Rukh Khan also, and even Rajkumar Rao. They are changing the narrative. Vicky Kaushal, they are changing the narrative of Bollywood. Definitely. Now इनमें क्या है? ये भी actors हैं, Khans भी actor हैं, Kapoors भी actor हैं. Difference क्या है? The difference is how they act. सब Bollywood में ही है, सब industry में ही है. This is where I say is the seed of thought leadership in analytics. Yeah. There are plenty of leaders, hordes of leaders. But I keep on saying in India, talk is cheap, thought leadership is elusive, and influencers are zilch. फिर एक चीज़ जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है, जो हम लेट रियलाइज करते हैं, ये कोविड के टाइम में रियलाइजेशन हुआ था। नाउ इरफान इज़ माई ग्रेट
I would say I'm a great fan of Irfan, the actor. And he died very early, I mean, through cancer. जाते वो उसने एक 3-4 लाइंस लिखी राघव which stuck me. आप शायरी के शौकीन हो, कुछ बताइए दो। ये मैंने लास्ट में पिकअप किया. Once you cross 45, lot of these things happen अच्छा, actually. okay. So उसने एक बहुत अच्छा बोला था कि जिंदगी छोटी नहीं होती, हम देर से जीना शुरू करते हैं. जिंदगी छोटी नहीं होती, हम देर से जीना शुरू करते हैं. जब तक रास्ते समझ में आते हैं, जाने का टाइम हो जाता है. क्या बात है. So I think somewhere Right. thought leadership is like this. We don't realize what we are. We always are besotted, fascinated by attack. That's not thought leadership. Thought leadership is also not about your tenure, pedigree, or I have spent 20 years in the analytics. No one cares. No one cares. It's about, do you have a POV, a point of view? And if that POV is differentiated, you can create a huge resonance in the market. तो 3 है जो आपने स्टार्ट किया, कुछ 2-4 लीडर्स जिनका आपको सपोर्ट मिला, जिनकी वजह से आज एक तो आपकी टीम है विच इज़ NK, कपिल, at that time there was Devesh also, and I think Soumya was also there, right? So that was the initial founding team, but outside that founding team, किन लोगों का सपोर्ट मिला आपको जिनको आप नेम करना चाहेंगे? See, Raghav, it's not about one person. I think I always feel myself blessed. मैं 2 चीज़ें हमेशा करता हूँ. मुझे जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं रियली लोगों से सपोर्ट मांगता हूँ. And then I'm actually blatant in saying कि मुझे सपोर्ट चाहिए. Second, I always invest in relationship for the long term. जी जी. Because networking, again, I have a very different formula of networking, that it's all about saying that, look, I'm ready to back you for the next 20, 25, 30 years, despite whatever you are. Tomorrow that person could be analytics, could be, let's say, a person who's handling a business, could be a startup entrepreneur, could be a kind of, let's say, a guy on the production. I don't care. जी. And this is what I learned, that it comes from the heart. रिश्ते ना दिमाग से नहीं बनते, दिल से बनते हैं. हम कई बार ये मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो एंगल है ना रिश्ते बनाने का कॉर्पोरेट में, वो दिमाग से, दिमाग से. अगर आप दिल से बनाओगे कॉर्पोरेट में भी तो वो चलेगा. तो 2-4 नाम लेना चाहो आप? Pankaj Rai. Everyone knows Pankaj Rai. Yeah. I keep on saying, if you don't know Pankaj Rai, there's something seriously wrong with you actually. And I know him from last, almost now 15 years. Yeah. And sometimes there is a thing in the market that besides Pankaj spending time with his wife, he spends more time with me. So हमारे में वो struggle चलता रहता है कि भैया तुम कहाँ time ज़्यादा spend कर रहे हो. But I had wonderful association and touch wood with him from last 15 years that हमने पता नहीं analytics के अलावा क्या-क्या बातें नहीं की. And it's a relationship where he and me have always seen a picture that ये analytics industry को कैसे we can take it to the next level. And it's not just about networking. It's not just about just getting 1-2 interventions. It's about really thinking hard about the industry. RB, I mean the guy who heads City today, he's a doyen of analytics industry. I tossed up the idea to him. He said, yeah, wonderful idea. Prithvi Jeet, I mean... Jit, yeah, as he's fondly called. Nitin Sareen. A lot of Rohini kind of a thing. Microsoft. Now, I think that's where we felt that there is a need in the market. So, now 3AI, as we all know, has been building this thought leadership in the right context for the leaders. Now, let's talk about analytics industry generally. Now, Sameer, I want to understand that 2-3 चीजें हुई लास्ट 3 साल में particularly, जिसकी वजह से कई लोगों का दिमाग चकरा गया. एक तो था लेटेंट व्यू का IPO, जहाँ पे लोगों को समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है. मतलब आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ जेनरिक व्यू पॉइंट कि XYZ रेवेन्यू एंड यू आर बीइंग वैल्यूड एट 50x, I don't know what x of that. And on the other side, a lot of these companies were trying to sell themselves. Without naming them, a lot of these analytics companies, as we know, were trying to sell themselves, but they could not even get sold for 4 or 5x of their revenue. Now, एक चीज तो क्लियर है, मार्केट बहुत बड़ी है, तो आज के डेट में फॉरवर्ड मल्टीपल्स मिल रहे हैं टू एनालिटिक्स कंपनीज. बट कितनी बड़ी मार्केट है, पहली बात तो ये समझनी है. दूसरी बात, व्हेन वी टॉक अबाउट वैल्यूएशन, व्हेन वी टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योर्स इन दिस स्पेस, व्हेन वी टॉक अबाउट सर्टेन एम्प्लॉइज who are working in these companies, banking on their ESOPs. What would you like to tell them? Where is this industry going? And how is the valuation
and the intrinsics of this industry working? No, so that's a very interesting and loaded thing, Raghav, what you asked. And let me break this entire thing into 2-3 dimensions. पहले बात करते हैं इंडस्ट्री की. And I keep saying with no qualms, ये जो इंडस्ट्री है, what I call D&A industry, data and analytics industry, is at an inflection point or at the cusp of what IT services was 20 years back. You see a 20-25% CAGR in this industry. No, I'm coming to that. What I'm saying, ये जो IT industry 2000 में थी, ये उसी cusp पे data analytics की industry बैठी है. Total outsourced market size currently for D&A segment is about $50 billion. Now, hear me out. यहाँ से statistics becomes very interesting. 2026, it will become $110 billion. What? It is growing at a CAGR of 18 to 20%. Now, ये CAGR क्यों important है? आप normally IT companies total IT spend देखिए, it's about $3 trillion, but growing at a just 3 to 4% overall. अब यहाँ पर आपको 6 गुना 6 multiple पे आपकी growth हो रही है. Now, if this pace continue, which by all means will continue, this industry will touch $500 billion by 2030 minimum. And India will play a big role in that. India will play a big role. 62% of the analytics of this outsourced thing is happening in India. Wow. This 62%, if we go by the same pace, will go at 72%. So you mean 400 billion, roughly $400 billion worth of value Absolutely. is going to be created in India analytics. Absolutely. अब आपने पूछी IPO तो हम दोनों सही काम कर रहे हैं मतलब. अब देखिए सरकारें भी यही बोलती हैं काम तो वो सही कर रहे हैं बट जो वोट देती है जनता वो इट्स ऑल अबाउट हाउ द मार्केट रिएक्ट्स बेसिकली बिकॉज मार्केट के भी गायरेशंस होते हैं हम देख ही रहे हैं क्या हो रहा है एकदम से वी हैड अ पेंट अप डिमांड एकदम से चेंज हुआ एनीवे सो दैट्स साइक्लिकल देन यू टॉक्ड अबाउट द थिंग अबाउट कंपनीज गेटिंग एक्वायर्ड एंड IPO of latent view and I give another analogy of latent view IPO with एक पंखा आया था पहले जिसका नाम किसी को नहीं पता होगा बट जब उसकी एड आई दैट पंखा बिकेम द बेस्ट सेलर फ्रॉम ऑलमोस्ट बीइंग अ 18th और 19th प्लेयर इन द मार्केट. Havels? नहीं PSPO. PSPO. वो टेक्नोलॉजी थी कोई उसने एक्रोनियम बना के एडवर्टाइजमेंट PSPO का पंखा है तो ये ऐड राघव मेरे ख्याल से उस समय बॉन्ड भी नहीं हुए थे तब से चल रहा है मुझे भी याद नहीं वो कौन सा ब्रांड है बट जस्ट PSPO की वजह से दैट ब्रांड बिकम नंबर 1 इन इंडिया. दैट एग्जैक्टली व्हाट लेटेंट व्यू इज ऑल अबाउट. No one at that point of time was thinking about an analytics company going an IPO route. What I call a attitude of being too conservative. But people always lap it up what is unique. आप इंडिया में देखिए लिस्टिंग कौन कर रहा है सर्विसेज कंपनी के अलावा केमिकल कंपनी लिस्टिंग कर रही है मैन्युफैक्चरिंग कर रही है. यहाँ एक कंपनी आती है कहती है हम एनालिटिक्स करते हैं. द शेयर इंट्रीग फैक्टर ड्रॉज इन्वेस्टर्स. Do you think the first movers thing was one of the biggest reasons? Also the segment move. No one actually thought in that segment कि हमें IPO करना चाहिए. And investors also look for some bit of audacity. उसने किया, let's trust him. And again उसमें फिर साइज मैटर नहीं करता राघव. उसमें यही मैटर करता है कि आप किस तरह से अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं. And now if you look at the current industry, and there are a lot of boutique firms without naming them, there are I would say at least 20-25 of them. No, इंडिया में 312 हैं. I'm talking about जिनका 10-15 मिलियन से ऊपर रेवेन्यू है. मैं उस तरीके की बात करूँ जो who have some level of skin in the game. मुझे जो फीलिंग आ रही है ना आप बताइए कंसोलिडेशन बहुत ज़रूरी है इस इंडस्ट्री में वरना मार्जिन ही नहीं बचेंगे. So what do you think? Is consolidation going to happen? M&A is going to happen? राघव इन चीज़ों में ना मैं हमेशा कहता हूँ कि थोड़ा सा ना these D&A segment while being so euphoric and buoyant, I think the founders and co-founders are creating what I call a self-inflicted wound philosophy. अपने पैर पे खुद क्या बोलते हैं कुल्हाड़ी मार रहे. क्यों मैं बताता हूँ. We have lessons to draw from IT services. Recently मैं NASSCOM के NTLF में गया था तो I heard Mr. Narayan Murthy was there. Someone asked a question to him that Mr. Murthy, what did you do when you became 0 to 1 and 1 to 10 and 10 to 100? He said at every stage I brought people and leaders smarter than me. Right. हम DNA में नहीं कर. The co-founders are stuck with this philosophy कि हम ही grow कर सकते हैं, हम ही सब कुछ कर सकते हैं. And this is actually hampering the whole industry. पर अभी तो बहुत छोटी है ना कंपेयर टू आप IT सर्विसेज में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है बी इट विप्रो बी इट इन्फोसिस बी इट व्हाटएवर ये लोग एक क्रिटिकल मास तक पहुंच गए तब जाके लीडरशिप लाए एंड मोस्ट ऑफ देम वर फ्रॉम कैप्टिव्स और व्हाटएवर दे वर डूइंग. यहाँ पे एनालिटिक्स इंडस्ट्रीज व्हाटएवर वैल्यूएशन वी माइट टॉक अबाउट आई थिंक 100-150 मिलियन से ऊपर तो कोई है ही नहीं.
आप जो एक एनालिटिक्स लीडर को या प्रोफेशनल को उठाते हो, दैट पर्सन गिव्स 3 to 4x रिटर्न्स इन टर्म्स ऑफ द इम्पैक्ट. चाहे बिलिंग का देखो, चाहे आप रेवेन्यू पर एफटी देखो, या इवन द इम्पैक्ट यू सी ऑन द बिजनेस साइड. ठीक है, क्वांटिफाइबल कई बार होता है, कई बार नहीं होता. सेम अप्रोच, आपको 40 लोग बीपीओ के लाने पड़ेंगे, मे बी 25 लोग सॉफ्टवेयर के लाने पड़ेंगे. वन, दिस इज व्हाट एनालिटिक्स पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड. फेयर इनफ. तो अपने आप को पहले से ही नीचे गिरा दो. एंड दिस अगेन आई से दैट अगर सोच थोड़ी दूसरे लेवल पे हो तो लोग भी एक सोच का प्रीमियम देते हैं. बट सोच ही अगर नीचे से होगी आपका, तो यहाँ पर क्या जरूरी है कि इट्स नॉट द क्वांटम ऑफ पीपल, इट्स अबाउट द काइंड ऑफ वर्क यू आर ट्राइंग टू डू, द इम्पैक्ट यू आर ट्राइंग टू क्रिएट. और उसको आप इम्पैक्ट को प्रोफेसाइज करो, एडवोकेट करो. और आपको कंपनी में 1 नहीं 2 नहीं 10-15 थॉट लीडर्स चाहिए. And this is our genesis of democratizing thought leadership in 3AI. वो एक कहते हैं ना कि इस पे एक शेर है कि sometimes who is a thought leader और कब हमारा वक्त आता है. तो इस पे एक शेर है कि सब्र कर, हौसला रख, वक्त तेरा भी आएगा, घड़ी किसी और की होगी, समय तेरा बताएगा. क्या बात. तो यही चीज थॉट लीडरशिप में और लीडरशिप या कॉर्पोरेट में है कि अगर आप थोड़ा सा अच्छी टीम बनाएं, एक एलिवेटेड काइंड ऑफ प्रोपोजिशन रखें और थोड़ी सी परसीवरेंस रखें, थिंग्स विल हैपन. एंड एस्पिरेशन हैज टू बी अ मून शॉट. दिस इज द रीजन आई लव फ्रैक्टल. देयर एस्पिरेशंस आर एट अ मून शॉट लेवल. मे बी 10 चीजें नहीं होंगी, बट वो जो 4 चीजें होंगी दैट विल हैव एन एज फॉर द वंस व्हिच फेल्ड. अगर आप D&A सेगमेंट में एस्पिरेशन नहीं रख रहे हो, यू कांट बिकम अ $1 billion कंपनी, यू कांट बिकम अ $15 billion or $10 billion कंपनी. दैट्स हाउ इट इज. So learnings for entrepreneurs in this segment, from what you're saying, are 2. First is be extremely aspirational, have the guts, dream big. Second, build the team. Don't falter on the second one, because I believe the second part, building that team, you are feeling that entrepreneurs are not doing enough on that aspect. I keep on saying that a company can have 2 co-founders and a company can also have 100 co-founders. It's a change of perception. I rather would have company should have 100 co-founders. Equity, stake, That's ESOPs, secondary. If there is a rallying cry, मैं इसका बताता हूँ राघव, मैं क्यों कह रहा हूँ. I meet with many startups, I meet with many leaders from corporate who are just into analytics, AI, data science. 600 लीडर्स हमारे 3I में, तो बहुतों से बात होती रहती. आई थिंक एक क्रक्स निकल के यही आ रहा है कि अगर मैं कुछ करता हूँ तो मेरी कंपनी मुझे शायद मना करेगी, और अगर मैं ज़्यादा फेमस हो गया, मेरा ब्रांड बन गया, तो हो सकता है मेरी कंपनी थोड़ा सा बोलेगी टोन डाउन कर. ये क्यों है? अभी भी है ऐसा. अभी भी है. You've seen that. आई एम सीइंग दैट. Interesting. मेरा उस पर रिफ्लेक्शन ये है दैट इफ दैट कंपनी इज नॉट वैल्यूइंग यू फॉर यू बीइंग अ ब्रांड, बिकॉज अ ब्रांड पुल्स टैलेंट, अ ब्रांड पुल्स कलेक्टिव, आई वुड से इंटेलिजेंस. अ ब्रांड then is resonated in the market, creates an equity for the company. Right, obviously. It's so good for the company. And I think somewhere, I also say, it's a coming of age for analytics AI leaders, because ये 5 साल 6 साल पहले ये बातें नहीं होती, which means now the CIOs and the CMOs of the world are thinking that अगर chief analytics officer बैठा है, that is not a shiny toy, it's actually a reality. आप मार्केट में देखिए राघव, पिछले 3-4 साल में क्या चेंजेस हुए हैं. I'm saying from a search perspective. इंडियन एंटरप्राइजेस में आज से 3 साल पहले everyone was hiring chief digital officers. बिग भर के इतने मैंडेट्स थे कि everyone saying अच्छा यार मेरे को भी CDO बनना. अभी वही मैंडेट्स आप चेक करिए मार्केट में have now morphed into chief analytics officer. Yes. क्यों? Digital is overarching. Analytics is the one which is game changing. And ये मैं आज भी कहता हूँ, इवन टू द जनरेशन टू कम, ये वो करियर है जो 20 साल तक एटलीस्ट व्हाट आई कैन सी विल बी रिसेशन प्रूफ. मैंने 20 साल देखे, मुझे आज तक ऐसा नहीं लगा इसमें अपॉर्चुनिटीज कभी कम हुई है. इतने लोगों से मैंने बात की है, इतने लीडर से बात की है, नेवर द अपॉर्चुनिटीज हैव एक्चुअली सबसाइडेड. इन एनालिटिक्स द जॉनर्स हैव चेंज्ड, द एक्रोनियम्स हैव चेंज्ड. MIS to BIDW to descriptive prescriptive analytics to data science, now to AI, now ChatGPT. ये ChatGPT का कुछ बताओ यार आप, बिकॉज बड़ा मेरे को आई टॉक टू दिस कोडर्स एंड ऑल राइट, एंड वो बहुत डरे हुए हैं. मतलब उनको लग रहा है कोड भी ऑटोमेट हो जाएगा, जॉब्स चली जाएंगी जो बात कर रहे हैं. यू नो पीपल आर टॉकिंग दिस हेड काउंट दैट हेड काउंट.
People say कि यार ये headcount की जरूरत ही क्या है? And अभी we were just talking about low code, no code. So थोड़ा about the job industry in analytics, ChatGPT का कुछ impact है या नहीं है? At the same time low code, no code. कहते हैं कई बार ही राघव, आपको कुछ चीज़ एक्सेलरेट करने के लिए ना कुछ अलग से करना पड़ता है और वो चीज़ें ना होती नहीं है. मैं एक एनोलॉजी बॉलीवुड की फिर से लेता हूँ. शाहरुख खान हैड डिलीवर्ड नो हिट इन 9 years. उसकी लास्ट हिट पता नहीं कब आई थी. वाई पठान के लिए कुछ कंट्रोवर्सी हुई, दैट गेव इनफ फ्यूल to the people to watch that movie. ChatGPT exactly the same for analytics industry. It's a kicker. It's a banger, I call it, kind of a thing, because ऐसा नहीं है लोगों ने पहले conversational AI text processing नहीं की. If you remember 2009, Microsoft launched Tay. That was a conversational like the early part of Siri. Unfortunately, that had to be shut down within few hours of it launch because उस समय इतनी processing power, इतनी accuracy नहीं थी. Alexa आया, it changed everything. कितना sample size का पहले issue था फिर से. Basically, my reflection is देखो 4 revolution हो चुके हैं. Agriculture, industrial kind of a thing, then software. Now it's an AI revolution. किसी revolution में jobs गई नहीं. The jobs got redefined. बड़ी हैं jobs तो. Got reskilled. I call ChatGPT a apt example of balancing human and machine. That equation will change. मुझे अगर चाय मंगानी है, अगर मैं यहीं से बोल दूं, and चाय कौन लाएगा? ChatGPT तो नहीं लाएगा ना. Those jobs are still relevant. Somewhere that person will pick up the command and then execute. So basically what we are saying, it's a rebalancing of human-machine equation. I'll give you some stats over there. So 1.5 years back, World Economic Forum did a survey, and that is much before ChatGPT, you know. And this was a rhetoric कि AI आएगा, jobs जाएंगी. So did a survey which constituted about 28 countries कि भाई आगे 10 साल में क्या है? And that was 2030 तक लेके कि क्या job आएंगी, क्या जाएंगी. So they did survey which was very revealing that 2.2 million jobs will be lost because of AI analytics in next 8 years. In these 28 countries, while the countries are much more, but 2.7 million jobs will be created because of the advent of AI. Now, what are this net incremental 500,000 addition? That is all these redefined jobs which are emerging. Behavioral scientists, कौन पूछता था इनको? Design thinking को. सबसे ज़्यादा requirement है अभी. आज की तारीख में मैं वही भी बोलता हूँ कि जिनको एनालिटिक्स एआई नहीं करना बिकॉज ऑफ द फियर फैक्टर, पिक अप दीज व्हाट आई कॉल स्किल्स, कॉम्पिटेंसीज. सबसे ज़्यादा इनरोलमेंट आज की तारीख में लिबरल आर्ट्स में, साइकोलॉजी में हो रहा है, इकोनॉमिक्स में हो रहा है, या सोशियोलॉजी में हो रहा है, एंथ्रोपोलॉजी में हो रहा है. क्यों? बिकॉज एनालिटिक्स नीड्स दैट एडॉप्शन, एंड फॉर दैट यू नीड दी स्किल्स. तो ये भी तो नई जॉब्स बन रही हैं जो हम कंसिडर नहीं करते. नहीं तो 8 सालों को पूछता कौन था? दिस इज वेयर आई से things will change. So now, Sameer, we have talked about your work, we have talked about your journey, about your entrepreneurial aspects. In your overall journey, if you had to look back, कुछ नाम लेना चाहोगे आप जिन्होंने आपको इंस्पायर किया, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, चाहे आप उनसे कभी मिले भी ना हो? You can start from your parents, whosoever those 3, 4, 5, 6 people were. It'd be good for our people to know. So I think inspiration तो राघव बहुत लोगों से मिलती है. I think day in day out, I keep on saying one when I come to naming some of the people. The support system is very important. Whether your parents, your spouse, your kids, if you're married, and even the support system around your the helpers. Right. If that is not there, I can tell you this is impossible. Because now, when I'm recording, is there someone at house to take care of my kid? Yes. To my dog also, kind of a thing. And also, are they well recognized? Do they understand the pain we all go through? I think it's a system which is participative, what I call collaboration, thrives on that. So if you don't have, I think you'll miss everything in life. Second, I think 2 चीज़ों से मुझे इंस्पिरेशन बहुत मिली है. एक, जिन भी टीम्स के साथ मैंने काम किया, the people I have hired or they've come on board, I think they're also inspiring. Because हमेशा एक हमें fear लगता है, नहीं यार मैं एक स्मार्ट बंदा क्यों हायर? I have never believed in. I'm more than happy to say that many of the leaders I've worked, being part of my team, they are much better in terms of their career journey, what even I had anticipated, which is so redeeming for me that I had that opportunity and privilege to work with them at some point. And this is what I say a kick-ass feature of analytics here, that it can make you really to the next level. Right. So that's one set of inspiration. The second is inspiration, I mean, what I say in the companies where you have met
the ecosystem, the network I had, kind of a thing. Difficult to name one person. Okay, Rahul. fair. It's like a huge Many, set of many. people to really thank. Sure. If we had to look at your overall journey, right? आज आप देख 20-25 साल हो गए, कुछ गलतियां तो आपने बहुत सारी की होंगी, आई एम श्योर, अभी आपने स्टार्ट भी ऐसे ही किया था. अगर एक या दो चीजें जो आपको लगता है कि ये मेरे को पहले पता होती तो बढ़िया रहता, क्या थी वो चीजें? गलतियां तो मैं अभी भी कर रहा हूँ. So जनरली मतलब क्या लगता है आपको? I think I still realize I'm an accidental into analytics AI. Maybe I should have chose a different profession altogether. And I'm taking that risk of saying today because ठीक है हमारे टाइम इतनी opportunities नहीं होती थी. And it's not that I repent being into or lament the fact why I should there. But I still believe I could have done something else also. Maybe marketing. I don't know. Maybe advertisement. Maybe getting into creative. Because at some level you realize that look, these are all things which fall in place. And ऐसा नहीं कि मुझे वो एक kind of है कि यार मैंने ये क्यों नहीं किया. But at some level, yeah, I could have done that as well. But now that you look in your journey, sort of with your entrepreneurial pursuit, you're doing that in some context in analytics, but you're doing all of that, right? Like you're a showman at heart. Yeah, beyond to showman at heart because entrepreneurial में कोई tax नहीं होता. Right. And this is the best time to kind of say that look, I'm enjoying that particular stint because thanks to the people who gave me advice to be into this, I would say, plunging aspect. Despite the rigmaroles, the grind, that joy of being on your own and proving your identity on a daily basis keeps you alive. I had to shed a lot of that baggage of tax. Yeah. I mean, Business class सबसे पहले. बिजनेस क्लास सबसे पहले और सब कुछ ये टाइटल अपॉइंटमेंट लेके किसी को बुलाना सब निकल गया वो हवा वगैरह सब वेपर वगैरह. नाउ इट्स लाइक व्हेनेवर आई एम मीटिंग एनीवन आई हैव टू प्रूव माय क्रेडेंशियल्स. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप फ्रैक्टल में थे, कॉग्निसेंट में थे या कंट्री हेड थे. उनको ये लगता अच्छा व्हाट इज दैट यू कैन डिलीवर फॉर मी बिकॉज दे हैव मल्टीपल पीपल जस्ट लाइक मी और एंटिटीज लाइक मी टू बी इन द सेम फ्रे. If I don't differentiate and prove. Well said, I think so. So one final question to an individual who's 23, 24, starting their career. One piece of advice if you could give, and just one from your heart, what is it? दो दूंगा. दो दीजिए, please. एक तो राघव मेरा जो मानना है कि लाइफ में दो पैशन होने चाहिए. अपार्ट फ्रॉम जो भी मैंने किया मेरा दूसरा पैशन ये है. हाँ थोड़ा घड़ियों के बारे में कुछ एक दो मैं उस पर आता हूँ एक्चुअली. दो पैशन आपको ना जिंदा रखते हैं क्योंकि एक पैशन कई बार आपको ना एकदम से कंप्रेस कर देता है. यू गेट बॉक्ड डाउन काइंड ऑफ थिंग. वो पैशन कुछ भी हो सकता है. डॉग रखिए, अपनी लाइफ इंटरेस्टिंग बनाइए बाय ट्रैवल, बाय कुकिंग, व्हाटएवर काइंड ऑफ अ थिंग एंड इंश्योर दैट देयर इज अ हेल्दी मिक्स ऑफ बोथ दिस प्रोफेशन और अदर पैशन व्हिच कीप्स यू गोइंग. एंड सेकंड, ज्यादा एडवाइस ना बाहर के लोगों से मत लीजिए. लेनी है तो इम्प्लीमेंट मत कीजिए. मैं इसका एक एनोलॉजी फिर से देता हूँ कि बड़ी इंटरेस्टिंग लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं. लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं. लोग तो ये भी बोलते हैं कि अच्छा ये करो वो करो. लेकिन वही लोग जब अमरूद खरीदते हैं, गुआवा, वो दुकानदार को ये कहते हैं कि गुआवा अमरूद मीठे देना और उसके बाद नमक लगा के खाते हैं. आई थिंक वी हैव टू टेक अवे व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू, what peers or people say. ये सबसे बड़ी चीज भगवान ने दी है. Use that. Perfect. यही आपको काम आएगी. And sometimes if this works, everything will work. That's how it is actually. Perfect. So I think before we end, थोड़ा घड़ियों के बारे में बता दो आप, because I think we both share that passion of watches. So you talk a bit about what are you wearing right now? Just tell us about that. I'm wearing a Cartier. This is a Time Series collection, and I developed. There's a lot of money in analytics, guys. I think that we can. Say that again. No, it's not about the money. I think it's a acquired taste. I think बहुत लोग कुछ ऐसी चीजों पे खर्च करते हैं जो उन्हें करना चाहिए. मैं उन पे करता हूँ जिनकी वैल्यू है और एक्चुअली वो दिखता भी है जो आपको दिख रहा है. And I think that's an acquired taste. But I keep on saying for the ones who are connoisseur of watch, this is a fantastic, I would say, set of area where just like. I mean, what I say, there are SKUs of FMCGs. Within the same brand, there are so many SKUs with different features. And this watch, when I researched, when I was buying, took about 800 man days Wow. to create.
Now think about this when I say, जो हम बात कर रहे थे कि इसकी precision की premium क्यों है? It's about the effort which has gone into that. This has again a correlation with analytics. आपका अगर impact दिख रहा है, आपकी एक differentiation or that effort is being shown, आपको premium मिलेगा. Right. So it's all about, I would say, watching analytics in the same space, Raghav. Perfect. So I think this was a very, very good conversation, and I think all of us learned a lot. It was very fun flowing. We saw this side of you where, you know, when we look at your LinkedIn, when we look at your YouTube, we see a very thought leadership or very top level things that we see. But आज जो आपसे बात हुई, we saw the intrinsic parts of you, which I think was very beneficial to all of us. So thank you so much, Sameer. Really appreciate it. Thank you, Raghav, and you made me spew a lot of things which I never wanted, but thank you so much. Thank you. Pleasure.